Hey guys, welcome back to the channel. So रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल भाई बहुत बड़ा मैच है चैम्पियंस लीग के स्टैंडर्ड से हिसाब के एक्साइटिंग मैच होगा भाई. थोड़ा बात करना था, एक नॉर्मल प्रीव्यू देना था. एंड मैं तो भाई ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ ये मैच के लिए बिकॉज रिवेंज. जैसे साला ने बोला कुछ सालों पहले, रिवेंज. आई नो थोड़ा वियर्ड कॉर्नी साउंड करता है, बट ऑनेस्टली बोलूँ लास्ट ईयर के बाद भाई लिवरपूल फैंस एंड लिवरपूल टीम, मोस्टली फैंस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा. बिकॉज लास्ट ईयर भाई भाई बहुत भाई उनका जब बारी आया भाई लेने का, तो भाई खुल मिल गए इतना मीम्स भाई, इतना एम्बाप्पे इज वॉश्ड, रियल मैड्रिड इज वॉश्ड, नेवर कमिंग बैक, रिवेंज इज स्वीट भाई, इतना वो लोग बात किए. मैं बस देख रहा था, इतना वो एम्बाप्पे का जो पिक्चर था उल्टा वाला, साला कॉना ब्रैडली वाला टैकल भाई, इतना डाल के वो लोग इतना मीम कर रहा था, ट्रोल कर रहा था, हर कमेंट में लिख रहे थे. एज लाइक भाई इनका तो भाई वी नीड देम, वी नीड टू प्ले देम नेक्स्ट ईयर अगेन. एंड बहुत अच्छा टाइम में मिला है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छा टाइम में मिला है. बिकॉज उनका तो फॉर्म अभी एज यू नो उनका फॉर्म बहुत बुरा चल रहा है एंड हम लोग का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है. एंड अगेन यू डोंट सी दीज मैचेस विद अ लॉट ऑफ फॉर्म, इट डिपेंड्स ऑन हु प्लेज, मतलब कौन वो दिन में परफॉर्म करता है. बट मैं बोल दूँ लिटिल बिट थोड़ा सा यू कैन टेक इन फॉर्म, यू कैन टेक इन मे बी जो होता है मोमेंटम ईच टीम का, हाउ दे प्ले द लास्ट 3 मैचेस 4 मैचेस, ये हिसाब से हाउ डू दे एंटर द करेंट सिनारियो, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. बट अगेन इट्स गोइंग टू बी, ऑब्वियसली इतना जो मैंने बोला इंट्रो में, इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ टफ मैच बिकॉज एंड ऑफ द डे भाई इट्स एन अवे मैच, इट्स इन एनफील्ड and it's Liverpool. ठीक है, they can turn up on their day and if they do it's not going to be good for us because I know हम लोग बहुत अच्छे खेल रहे हैं, हम लोग का लास्ट मैचेस बहुत अच्छे गए हैं, स्टफ लाइक दैट. बट फिर भी यू नो देयर इज दैट न्यू, like that newness to the team, they are still adapting to the tactics, to the structure, to the formation, to the roles, ऐसा for Real Madrid. And for them to play these big matches as a team together for the first time, like Alvaro, Housen, Trent is not going to play, but Franco, Mbappe, in the sense कि सब एक साथ पहले like Vinny, all of them playing these matches as a team, they are still playing these big matches together. Now जैसे आप जानते हो पहला प्रॉपर मैच एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट था एंड हक दिए थे हम लोग, पूरा टीम या भी कुछ नहीं था उसमें, ठीक है, हक दिए थे. सेकेंड बिग मैच वॉज अगेंस्ट यू कैन से यूवेंटस एंड दैट ऑल्सो वॉज नॉट दैट गुड ऑफ अ परफॉर्मेंस. 1-0 जीते बट परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत ख़राब था. एवरीबडी वॉज स्लो, लथार्जिक, स्ट्रक्चर नहीं था, सब अपने अपने चीज़ कर रहा था, बहुत वियर्ड गेम था विच आई डेंट लाइक. बट अगेंस्ट बार्सिलोना which was our third big game of the season, you can say like third proper big game, सही वाला परफॉर्मेंस दिए, like third times the charm type, अच्छा परफॉर्मेंस दिए. याबी ए गेम में था, प्लेयर्स ए गेम में था, जूड वॉज बैक, विनी हैड एन इंसेनली गुड गेम, एम्बाप्पे हैज़ ऑलवेज हैड अ वेरी गुड गेम, फेडे, मिलिटाओ, तीबू had good games. So we came into a form, into a structure, into a unit कि भाई अभी ऐसा खेलना होगा with all the matches, not only small matches, not only against mid team matches, but against big teams as well, big teams, big players, big occasion, when the lights are bright, खेलना पड़ेगा भाई. ऐसा नहीं कि तुम obviously Xavi needs time to adapt, team needs a time to adapt under Xavi, but still you need to प्रोग्रेस एट अ रेट, एटलीस्ट प्रोग्रेशन देखना चाहिए. तो प्रोग्रेशन है. लॉस वर्सेस एथलेटिको, मीडियो का परफॉर्मेंस वर्सेस जुवेंटिस एंड अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट बार्सा, तो प्रोग्रेस है, राइट. नाउ कैन वी टेक दिस प्रोग्रेस टू अनदर लेवल विथ अ विन अगेंस्ट लिवरपूल, ये देखना होगा एंड आई होप वी डू बिकॉज लाइक आई सेड revenge whatever, but we need to win against Liverpool. Okay, Liverpool is one of our favorite opponents Champions League में. Vinicius Junior का one of the most favorite teams है. He scored so many goals against them, assisted against them,
tie-breaking moments against them, seasons after seasons. He's dominated them home में, away में, Champions League final में. तो for Vinny it's a big match because he's the player I feel Liverpool fans को डर लगता है. Like ये वो shit, he's like that one जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, I forgot that term जहाँ bogey Vinicius is like the bogey player, like, right? He always scores against them or assist against them, या कुछ ना कुछ करता है वो, like something out of the another from quite some time back. भाई जब वो ब्रेक थ्रू सीजन हुआ भी नहीं था उसका, उससे पहले वो कर रहा था. रिमेंबर 2020 या 21 या 22 नहीं 2021 सीज़न जब जिडान था हम लोग का टीम में, जब हम लोग अल्फ्रेडो डे स्टेफानो वाला स्टेडियम में खेलते थे. उस टाइम विनीशियस ने 2 गोल मारा. क्रूज का एक असिस्ट था, याद है वो चेस्ट में लिया था, ट्रेंट के साथ लड़ाई हुआ था. उस टाइम से वो भाई हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है लिवरपूल को. तो विनीशियस इज़ अ प्लेयर टू लुक आउट फॉर. सो या ओवरऑल रियल मैड्रिड हैव बीन प्लेइंग वेरी वेल. Few like stats regarding them, like as of now, are that Real Madrid have won all their Champions League matches. ये तो पहला बात है. Champions League में हम लोग सब मैच जीते हैं, भले ही एक परफॉर्मेंस खराब या 2 परफॉर्मेंस खराब, मैच टू मैच जीते हैं हम लोग 3 मैचेस अप टिल नाउ. वी आर द वन ऑफ द 5 टीम्स, मतलब जो 5 टीम है to win all 3 matches. ठीक है. I think first is PSG, Bayern, Inter, Arsenal, and I think Real Madrid. So these are the top 5 teams that have up till now won all their matches. Liverpool have lost their first match versus who was it? Galatasaray. हाँ Galatasaray था. I think away था, है ना. वो 1-0 था मैच अवे, वो लोग हार गए थे. फिर एक अच्छा कमबैक मारा था उन्होंने अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, 5-1 जीते थे. एकिटिकी का पुराना टीम. सो दे हैव ऑल्सो बीन इफी बट या 5-1 विन इन देयर लास्ट चैम्पियंस लीग मैच इज़ अ गुड शोइंग. हम लोग का लास्ट गेम था अगेंस्ट यूवेंटस, बट हाँ यूवेंटस के बाद थोड़ा वी प्रोग्रेस बेटर, बट लिवरपूल इन द चैम्पियंस लीग हैव डन दैट. फ्यू मोर स्टैट ये है दैट मैड्रिड आर ऑन अ गुड स्ट्रीक ऑफ फॉर्म राइट नाउ. I think 6 matches in a row हम लोग जीते हैं so far. If we win against Liverpool, that will be 7 matches. So we are in a good form. Let's talk little bit about our standard बोल रहा हूँ भाई, stand out players, okay, like our star players. Firstly Mbappe, 19 goals, 2 assists, जो भी उसका stats है, but बंदा बहुत बहुत सही फॉर्म में खेल रहा है. दिस इज़ एग्जैक्टली द फॉर्म वी नीडेड हिम लास्ट सीजन अगेंस्ट लिवरपूल, राइट. ये सीजन ही इज़ ब्रोक थ्रू, बहुत गोल्स मार रहा है. लास्ट सीजन भी मारा गोल्स, बट दिस सीजन इज समथिंग डिफरेंट. अब वो मजाक के लिए गोल मार रहा है, एकदम मस्ती के लिए गोल मार रहा है. ऐसा नहीं है कि भाई प्रेशर में परफॉर्मेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. हर गेम एक्सपेक्टेड है एम्बाप्पे 2 गोल, 3 गोल, 1 गोल, 2 असिस्ट, परफॉर्म ही करेगा, right? So Mbappe is one of the best players right now in the world, not only in Real Madrid but in the whole world. Top 1, top 2, top 3, you all decide, but he's insane right now. So I'm looking forward to his game tomorrow and how he fares up against Van Dijk or Conor Bradley, or the midfield with McAllister. I think Gravenberch will be playing, Konate. So I want to see how Mbappe performs against them, especially last year के बाद. Then you have Jude Bellingham, who's come back. You have Arda. Little bit on Jude. His proper first game he had, I think against, मैं भूल गया कौन सा किसका against वो 90 minutes खेला. But his nice proper game where वो announce किया कि भाई मैं वापस आ गया हूँ, I'm back, was against Barcelona. 1 goal, 1 assist, insanely good performance. Pedri को झुलाया. And last game as well, insanely good versus Valencia, जो Real Madrid ने जीता 4-0. One of the best performances of his again this season after Barcelona. भाई offensively, defensively, goal contributions, defensive contributions, भाई literally क्या गोल मारा उसने भाई. रन दे रहा है, पास दे रहा है, लाइन ब्रेकिंग passes, की passes, हर चीज़ कर रहा है. ही रन्स द होल मिडफील्ड, लाइक इट्स लाइक हैविंग 2 जूड बेलिंगम्स इन वन टीम. वो ऐसा खेलता है विद अटैक एंड डिफेंस सब. सो इंसेनली गुड गोल बाय हिम, वो भी फॉर्म में है. सो ही इज़ वन ऑफ आर बेस्ट प्लेयर्स. आर्दा गुला एज वेल,
insanely talented, one of my favorite players. I know against Barcelona उसने उतना खास नहीं खेला. In fact उसने एक mistake भी किया जो एक which led to a goal. But overall his season has been a solid season, like a good 7 out of 10, good 8 out of 10 season. And I expect him tomorrow to have a good game, because I want to see him perform against big teams well. You know, वो अच्छा teams के against perform करता है, but I need to see him perform better in bigger occasions, bigger teams, away matches, you know, stuff like that. And उसने जो लास्ट आई थिंक 7 असिस्ट, लाइक 10 असिस्ट, लास्ट 10 असिस्ट कुछ उसने एक बार गुंजालो को असिस्ट दिया, एक बार चुएमेनी को असिस्ट दिया, बाकी सारे असिस्ट एम्बाप्पे को दिया है भाई. उसका लास्ट 7 असिस्ट has all been to Mbappe. So this duo is like right now one of the best in the world. Honestly, बोल रहा तो one of the best in the world after Rafinha और Yamal जो हुआ last year and all that. Right now तो वो लोग कुछ कर नहीं रहे उतना, but because Rafinha is injured and Yamal has also been injured. But I'm talking like currently Mbappe and Arda Güler have been insane. भाई clinical. Arda का assists clinical है, Mbappe का goals clinical है. I'm very happy with all that. So I look forward to Arda again assisting Mbappe hopefully tomorrow. So let's see. Now, who all is there? You have a Militao who's insanely who जो बहुत अच्छा हो गया भाई. In the sense अच्छा था, but to pick up form after injuries like you know 2 ACLs to being the best centre back in the world, for me it's respectable भाई. ठीक है, it's respectable. Not many players can do this. Like 1 ACL is enough, 2 ACL is extreme, and bro he's literally performing so well defensively. भाई रॉ के हम लोग के लिए pace, power, timing, everything is good. Thibaut Courtois also safe hands. I'm nothing much to say about him, he's been good. Alvaro Carreras has कहाँ से भाई वो यू नो वर्ल्ड फुटबॉल में आ गया है, लाइक इतना उसका लेवल प्रोपेल हो गया है. लाइक यूनाइटेड फैंस लिटरली वांटेड हिम टू प्ले. टेन हाग उसको एक बार भी नहीं खिलाया, उसको भेज दिया. ही वेंट टू बेनफिका में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था. मड्रिड का आई कॉट किया, ही कॉट मड्रिड्स आइज. He came to Real Madrid and भाई क्या performances दे रहा है भाई. Like his start of the season was okayish, like a good 5 out of 10, but right now he's edging to a 7, 8 out of 10 just like Arda. Very important at the back for us at left back, because अभी उसका attacking contribution अच्छा हो जा रहा है. Goals मार रहा है. Last game against Valencia is so good goal, one of the best of the week. उसका connection with Vinicius, his connection with Mbappe, his connection with Housen, with the midfielders is very good. बहुत काम है, बहुत cool है, and defensively भी बहुत सही है. The way he wins the balls, the way he wins tackles, duels, pace में या you know defensive actions में जो भी Alvaro has been playing insanely well. He's topping it. So very very good. Just what we needed. वही पीछे जो लैक कर रहा था लेफ्ट बैक पोजीशन में विथ यू नो विथ फ्रान, विथ मेंडी तो ऑब्वियसली हर बार इंजर्ड है. सो फ्रान वाज जस्ट लाइक दिस पेस मर्चेंट, यू नो नॉट नथिंग मच डिफेंसिवली. अटैकिंग वाइज ऑल्सो ही वॉज इन द बेस्ट. Alvaro बहुत अच्छा बैलेंस है. ही इज़ अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ बोथ. So to have him is I'm very happy. Housen as well, बहुत important player in the sense ball playing type and defensively type, very good and very young. So I'm very happy with him as well. Militao, like I said, Fede Valverde bhai. Fede Valverde has to be one of the most underrated players in the world. मैं देखता नहीं हूँ इतना फुटबॉल फैंस उसके ऊपर बात करते हुए like he's one of the best players in the world or one of the most underrated players. कोई बात नहीं करता. Mostly it's literally Real Madrid fans. But भाई under the radar चले जाता है भाई. His game sense, his positioning, his availability to the team is so important. देखो कावाल इंजर्ड हो गया, ट्रेंट इंजर्ड हो गया, वैल्वर्डे इतना अच्छा से वो पोजीशन कब्जा कर दिया अपना ऊपर, एंड ही इज़ बीन परफॉर्मिंग इंसेनली वेल ऑन दैट पोजीशन, इंसेनली वेल. भाई वो टक इन करता है ऑब्वियसली, लाइक ही इज़ अ मिडफील्डर, तो राइट विंग से राइट बैक से वो मिडफील्ड में आता है, तो ही इज़ सो गुड डिफेंसिवली, अगेन ऑफेंसिवली, टैकल वाइज, पासिंग वाइज, लाइन ब्रेकिंग रन्स उसका जो मेन है, बॉल कैरिंग सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम राइट बैक
फ्रॉम मिडफील्ड एंड फ्रॉम राइट विंग भी खेलता है भाई वो, इतना अच्छा क्रॉसेस डालता है, उसके पास पेस है, थैंक्स टू कार्लो एंचेलोटी जो उसको राइट विंग में थोड़ा डेवलप किया था 22-23 सीजन में, या सॉरी 22-23 सीजन में, हाँ 22-23 सीजन में विद द ब्लॉन्ड है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद हिज डेवलपमेंट एंड कैप्टन है भाई, परफॉर्मेंस दे रहा है गांड फाड़, तो आई एम वेरी हैप्पी विद वेल्वर्डे। विनिशेस एज वेल, स्टार प्लेयर लाइक आई सेड, क्रिटिसिज्म हुआ है बट guy is playing well. Last game penalty miss किया which I'm pissed off with, but I'm expecting him to perform well against Liverpool. So yeah, these are the main standouts that I wanted to talk about with Real Madrid. Now I want to end the video quickly with a little bit of Liverpool. अब देखो यार, मैं ज़्यादा लिवरपूल देखता नहीं हूँ, इन द सेंस मैं उनका हर गेम नहीं देखता हूँ। FPL खेलता हूँ तो ऑब्वियसली उनका 1-2 मैचेस देखता हूँ अगर उनका प्लेयर्स मेरे टीम में है, बट फॉर नाउ आई डोंट हैव एनी ऑफ द प्लेयर्स, रीज़न बीइंग ऑल ऑफ देम आर वेरी poor as of now, in the sense पूरा टीम poor है, right? Their last 8 matches they've lost 6 मैचेस वो लोग हारे हैं, they've only won 2 matches. They've lost against Crystal Palace, against Chelsea, against United, against Galatasaray like I said, and recent loss against Palace tha at home again. Sar, insane goals, insane player, so they've not been in the best of the forms. Reason भाई, if you ask me, I don't really know. मैं कहा थोड़ा बोल सकता हूँ मे बी इज़ दैट teams have found out Slott's structure, uska formations, his way of playing, I feel, and it's made it worse with the new players he's bought. Not saying that they are bad players, Isak, Wirtz, Ekitike, Frimpong, Kerkez, they're good players, okay? Some of them are world-class players, but fitting them into the structure that he had last season, which was mostly Klopp's team, and reinventing it now with them is different, which is not working out as of now. As you know, Wirtz इतना अच्छा खेला था जाबी के अंदर last season ही, now is performing underwhelmingly, right? He's not been the best. थोड़ा actions यहाँ वहाँ ठीक है. If you think him not being able to score a goal till now in the Premier League is bad, then yes, it's insanely bad. So he needs to buckle up. And Isak, of course, अभी उसका तो इंजरी हो गया, तो he's not going to be available tomorrow. Gakpo, Ekitike are 2 players which I am a little worried about. Ekitike especially, he's been good on top. अगर उसने एक अच्छा रन दिया या aerial duels में he beats one of Militao or Housen, then it can be trouble. And Gakpo of the left is also a very good player. उसका shot striking, उसका ball striking, उसका attacking, he's pretty good. So Fede Valverde versus him will be a good lookout. More players are Szoboszlai, who's good in midfield. Set piece taker है भाई, बहुत अच्छा है. We have to be careful of Van Dijk, because Van Dijk पूरा सीजन में 2 गोल मारा है, and दोनों गोल चैम्पियंस लीग में ही आया है. So we are playing Champions League against them tomorrow, and I hope we don't concede against Van Dijk. Housen, Militao have to take care of this, but they have more aerial players like that. They have Konate, they have Van Dijk, they have Ekitike. Gakpo is decent, so they have good players in height wise for them. Even Szoboszlai is 6'1", so they have good players over there. And yeah, coming on to the whole overall, like I said, their team, I don't really know much, but what I know little bit is I think they're having a hard time fitting the players in their structure, and because of that confidence is low, and because of confidence being low, because of stuff not working out, they are not being able to play well. उनका जो full backs भी है, Frimpong and Kerkez जो वो लोग लाए थे, Frimpong is injured right now, right? So he's not performing. I mean, his performances have not been that good, but right now he's injured. Kerkez has also been underwhelming. He's not like what Robertson was, like, when he came in. Robertson तो भाई गांड-फाड़ player था left back में, one of the world's best at a time, but Kerkez is not anywhere close to that. And obviously new signings है, by end of the day it's a new season, new signings, they need to adapt. Maybe we'll talk about them in season 2, but for now, season 1 with them as new players, we shouldn't be judging them as much as we should, but I feel they will come good, but I hope they don't come good against us. But that's all I want. And yeah, I hoped, before I end this video, I just hoped that Trent played this game, but unfortunately वो नहीं खेलेगा ये game. And it could have been an insanely good storyline भाई, that he was in the team last year with Liverpool watching us lose, and now he's with us hoping to win against his former club.
सो वो एक अच्छा स्टोरी हो जाता भाई. बट ऑनेस्टली नो, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी, आई डोंट थिंक सो ही इज़ गोइंग टू प्ले. बिकॉज अगर उसने वेलेंसिया के अगेंस्ट नहीं खेला तो वो आई डोंट थिंक सो 1 मिनट भी नहीं मिलेगा लिवरपूल का अगेंस्ट. प्रॉबेबली 2 minutes इन द एंड और सम शिट. बट आई डोंट थिंक सो ही इज़ गोइंग टू प्ले. आई थिंक उसका नेक्स्ट गेम रायो का अगेंस्ट ही आएगा. एंड जाबी इज़ गोइंग टू मीट हिज ओल्ड टीममेट्स, सॉरी हिज ओल्ड प्लेयर्स विथ वर्ड्स. फ्रिंगपोंग तो है नहीं, बट आई गेस स्टैंड में होगा तो हेलो भाई बोल देगा. बट अदर दैन दैट, looking forward to this game, and my prediction, even though Liverpool has been bad and Madrid has been very good, I would still say 2-1 to Real Madrid. A good close, a good, good 2-1 solid victory, just like Barcelona. I don't want to predict 3-1, 4-1, because I don't really think we're going to score that many against Liverpool, because you never know, Liverpool may be on the A game defensively, or may, with the help of Anfield, close us down. But if they have an off day, I can easily see us scoring 4 goals against them. Like 4 तो हम लोग मार देंगे. But let's be realistic and let's be little bit humble gimmick, थोड़ा थोड़ा पेन लेंगे हम लोग. 2-1 to Real Madrid, and I'm pretty sure Mbappe is going to be scoring both or one of the goals. So yeah, hopefully you all like the video, like this review, preview. Like, share, subscribe, and see you all on the match review.